remember that the doctrine of repugnancy is applicable only for the subjects of concurrent list. This doctrine will not be applicable for the matters which are given either in the union list or in the state list. Because for union and state list, the parliament and state legislatures have exclusive legislative competence. It means exclusive law making powers. तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स इन एनी केस कैन नॉट मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट्स. सिमिलरली, on the subjects of state list, the state legislatures have the exclusive powers to make laws, so again this doctrine will not be applicable. However, we know that for the subjects of concurrent list, because both the parliament as well as the state legislatures have the powers to make laws, so it is possible that a situation arises in concurrent list that there is a subject in the concurrent list, and on that subject both the parliament makes a law as well as any state legislature also makes a law. And what if those two laws are incompatible with each other? क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है कि उसी सब्जेक्ट के कुछ डायमेंशंस के ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाए और उसी सब्जेक्ट के कोई और डायमेंशंस, कोई डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाए. तो भले ही वो दोनों लॉज सेम सब्जेक्ट के ऊपर हैं, लेकिन दोनों लॉज अलग अलग डायमेंशंस को कवर करते हैं, तो उस केस में रिपग्नेंसी अराइज नहीं होगी. नाउ दिस कॉन्सेप्ट कैन बी derived in our constitution from article 254. So this article says that if such a situation arises whereby on the same subject of concurrent list both the parliament as well as state legislature of any state makes a law, then the parliamentary law will prevail. It will work rather than the state legislature's law. So parliamentary law has greater importance than the law of state legislature. However, we have an exception to this rule given in the constitution. What is the exception? Let us take an example. Let us say concurrent list. So you all know that in concurrent list we have a subject. Concurrent list, we have subject of criminal law, including the IPC, which is now the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. That means the constitution gives both the parliament as well as state legislatures to make laws on criminal matters. Now IPC is a central law, which is the main criminal law of India, which was until recently, it was the main penal law of India and has been now replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Now in IPC, sections 375 and section 376, they dealt with the offense of rape, and the maximum sentence allowed for the offense of rape was life imprisonment, unless rape is accompanied by any other criminal act, for example murder or physical atrocity, physical violence against the victim. Then the judiciary may award death penalty, but only for the act of rape. The maximum sentence allowed in the law was life imprisonment. So there was a debate, there was a demand rather, we can say, by some sections of population that why can't the parliament amend the law and provide for death penalty
फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो इससे पहले कि पार्लियामेंट कुछ ऐसा कर दी, मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ने एक बिल पास किया और उस बिल में उसने ये बोला दैट इफ दिस ऑफेंस ऑफ रेप टेक्स प्लेस विद अ गर्ल whose age is less than 12 years, less than 12 years of age, and if that crime happens within the territorial jurisdiction of the state of Madhya Pradesh. Of course, the law would be applicable only if the crime happens within the territory of Madhya Pradesh. So, if that act, criminal act, takes place within the territory of Madhya Pradesh, then the maximum sentence allowed was increased from life imprisonment to death penalty. तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे अब एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है कि उसी क्राइम के ऊपर जो सेंट्रल लॉ है, जो पार्लियामेंट्री लॉ है, वो क्या पनिशमेंट दे रहा है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन अब एक स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास कर रही है और वो क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर रहा है? डेथ पेनल्टी इफ द विक्टिम इज लेस देन 12 ईयर्स ऑफ एज, इफ द एज ऑफ द गर्ल इज लेस देन 12 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो हुआ क्या था कि 2017 में, in 2017 this bill was passed, and when the bill was sent to the governor of Madhya Pradesh, governor used his veto powers given to him under Article 200, and governor reserved the bill for the president of India. And the president at that time was President Ramnath Kovind, and what he did, he gave assent to this bill. It means this bill received the assent and became an act. तो अब यहां पे आप देख रहे हो कि रिपग्नेंसी तो है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। पार्लियामेंट्री लॉ कुछ और कह रहा है और स्टेट का लॉ कुछ और कह रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन या रिपग्नेंसी तो है, लेकिन क्योंकि उस स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उस स्टेट में स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब काम करेगा, एंड नॉट द सेंट्रल लॉ, नॉट द पार्लियामेंट्री लॉ। तो यहां पर द डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी विल नॉट अप्लाई। अदरवाइज इन ऑल अदर केसेस, इफ देर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड अ स्टेट लेजिस्लेचर, देन ऑलवेज द पार्लियामेंट्री लॉ विल प्रिवेल। तो ये मध्य प्रदेश इंडिया में पहला स्टेट बना था जिसने बिल पास करके इट प्रोवाइडेड फॉर डेथ पेनल्टी। उसके तुरंत बाद एक दो महीने बाद उत्तराखंड ने ऐसा एक बिल पास किया, फिर राजस्थान ने ऐसा बिल पास किया। तो इसका मतलब देश में एक ओपिनियन बन रही थी कई स्टेट्स में कि भाई इफ नॉट फॉर ऑल केसेस ऑफ रेप, एटलीस्ट फॉर दोज केसेस वेयर द एज ऑफ द विक्टिम इज लेस देन 12 ईयर्स, एटलीस्ट वहां पर पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? डेथ पेनल्टी। तो फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक ऑर्डिनेंस वो लेकर आए अंडर आर्टिकल 123 विच अमेंडेड द आईपीसी। उस ऑर्डिनेंस को फिर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था मॉनसून सेशन में 2018 में, एंड देन द लॉ बिकेम एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। So I hope you understand what is doctrine of repugnancy. एक और चीज कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी वहां अराइज नहीं होती है जहां पे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कि उसी सब्जेक्ट के अलग डायमेंशंस, मान लो उस सब्जेक्ट के कुछ डायमेंशंस ये हैं और कुछ डायमेंशंस ये हैं, तो इन डायमेंशंस के ऊपर मान लो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, और उसी सब्जेक्ट के कुछ और डायमेंशंस के ऊपर लॉ बनाया है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो अगर ये दो लॉ अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं और उनमें आपस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो फिर ये स्टेट का लॉ ये नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा, ये रिपग्नेंट नहीं होगा, राइट। ये रिपग्नेंसी सिर्फ वहां पे होगी जहां पे ये दो लॉज आपस में ऑपरेट नहीं कर सकते, दे कैन नॉट कोऑपरेट, दे कैन नॉट cooperate, or you can say they cannot coexist. Then only the court, the judiciary, will declare the law of the state as null and void using the doctrine of repugnancy. So I hope the concept is clear to all of you.